UP, you go to Prayagraj, you come to Kashi and you cover an entire circuit. I would actually say the tourist circuit should be intercity as well. You go to a particular city, you go to a particular place. Can we hope to have a circuit within the same city covering different monuments? This is again a sector, a space which probably we have not given so much attention to. For almost all the destinations, there is a huge opportunity in terms of creating a network of, to say, if I come to Prayagraj with 1 day, what is that I can see? If I have 2 days, what can I do? If I have 3 days, what is that I can do? So these are concepts which most of the countries who today are quote-unquote leaders in tourism across the world, they actually sell and market it better. So it all comes back to the private sector joining hands with us. And here I would like to place on record, our Honorable Minister Kishan Reddy sir is here. We are working on a scheme called Monument Mitra. This basically is inviting the private sector to work with government in taking the heritage and culture forward. The details of this scheme are still work in progress. Once we have some clarity on that, we will share it with you, probably in a similar or a grander event at an appropriate forum. But suffice it is to say that we really look forward to working with all of you. And in a state like UP, if we can make a beginning, I think it will be a beacon to the entire country. Thank you. Thank you so much, ma'am. And yes, the youth has to be touched upon. That's the point that we can actually take away. And now we have with us Mr. G. Ashok Kumar, IAS, Director General, Namami Gange, Government of India. We heartily welcome you. And I request Mr. Ashwini Pandey to please give a floral welcome to him. So ज़रा थालियां हो जाए इनके लिए. नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट जो रिवर गंगा के बारे में है. So Mr. G. Ashok Kumar is known as the Rain Man of India. Everybody, let's put our hands together for him. Thank you, Honorable Minister for Tourism, Kishan Reddy Garu, and all the senior dignitaries on the dais. I'm very happy to be here in this event. People may think, what is the connect of Namami Gange and tourism? Well, there's a lot of connect between river and tourism. A thing which we have not exploited, though we keep on telling that if I go to England or London, I do a cruise in Thames. I go to Paris, I do a cruise in Seine. But all our rivers in India are in poor state. There's a lot of pollution in there. And whenever there's, if there are no pollution, there is less water flowing in it. So this is high time we realize the potential of river to enhance our tourism capabilities and also to make riverfront as a very attractive destinations. So Namami Gange is one project very close to PM Sat. He always talks about Namami Gange because it is meant to clean the holiest of rivers in the country, the Ganga. And Honorable Prime Minister, all the gifts he received is auctioned and the money is given to Namami Gange. In the last meeting of the National Ganga Council, which is headed by the Honorable Prime Minister himself, and we have almost 10 ministers of the Union Cabinet and 5 Chief Ministers present, he had given a concept of Earth Ganga. Earth Ganga is actually to connect river and people to a bridge of economics. And that's where the tourism comes in. Ganga ji, we call Mother Ganga. It's a historic river which has tradition, religion, culture, everything linked to it. It was a polluted river. And in the last 8 years of constant monitoring and interventions into the river, Namami Gange has come out as one of the top 10 flagship programs of the world.
So I'm very happy to inform you that on December 13 last year, at the COP15 conference in Montreal, Namami Gange was assigned as one of the top 10 eco-restoration projects in the world. A very, very, very big achievement for us. And many of you who have seen Ganga before and see Ganga now, Ganga is much cleaner. So building on that, we have taken up this direction given by the Honorable Prime Minister, the Earth Ganga. 6 pillars have been identified under the Earth Ganga, and one of the important pillar is livelihood generation as well as culture and heritage tourism. Now, if you know Ganga, it's the most historical river. There are so much of mythology associated with it. The Trinity of Vishnu, Maheshwara and Brahma, all of them are in some form or associated with the river Ganga. And on its banks, we have many, many important cities like Kashi, Prayagraj, and many of them, which has tremendous mythological significance, which have historical significance, which has a lot of cultural significance. So as a part of the endeavor to get people associated with river, we initiated a study by INTAC. About a 3.5-4 crore project was given to INTAC. And after intensive studies, they have come out with 2 volumes of book, which I was presenting to the minister today. It's about 4.5 kilo book. It has details of all the historical, mythological and cultural aspects of along the Ganga River. And that's where we are trying to promote people connect to the river, to the economic bridge, and one of the main pillars of that bridge is tourism. We have trained a set of people called Ganga Praharis, who actually were helping in restoration of the biodiversity of the country, of the Ganga basin, from 350 to 400 dolphins in the river there for last maybe 5-6 years. Today, the count has gone up to 3,300. It's a significant achievement for us because the presence and the increase in dolphins in the Ganga River is an indication that the water is clean. Now, yes, because this is the best indicator to know water is clean, because dolphins do not have any political bias, dolphins do not have any hidden agenda. If the water is good, they'll multiply, they'll be very happy swimming all over the place. Our dolphins number has increased, the otters and fishes numbers have increased. And that is one big testament which helped us in getting the top 10 projects of the world award. Now, coming to that, once the water is clean, we can provide a lot of facilities for tourism. And that's why we started this, with the help of the Indian Waterways, we started the Ganga cruise, which is going on very well. That was a longer cruise, but we are through these Ganga Praharis starting what is called as small river cruises. We have taken up small river cruises in many places to ensure that people can take smaller cruise in this river. We also have these Ganga Praharis showing off the various dolphins and other aquatic animals in the river. We have started something called as Ganga Aartis. See, in most of these Ganga basin, we have something called as the ghats, the riverfront. You have seen 84 ghats in Varanasi, which we keep, Namami Gange cleans up regularly. And like that, we have more than 269 ghats built across the riverfront. From Mayapur down in Calcutta up to Rishikesh, Badrinath, and Gangotri, we have ghats built. Now, we thought this as a beautiful way to connect people and river to the ghats. In the last 6 months, we have started Ganga Aartis in many places. Now, why Ganga Aartis? Because we river the river. We treat her as mother, and what better way to show respect than to offer the prayers.
So the Ganga Aartis which are happening in Varanasi and probably in Rishikesh and Haridwar in certain locations, we have decentralized it and now taking up Aartis in almost 100 ghats across the sea, across the Ganga basin. And to ensure uniformity, we follow a 70-30 principle. We say 70% standardization we've done and 30% of the local variation la sakta hai. So it's we have organized training program for Ganga Prairies to conduct training Aartis in the river, and that is the best way to attract people to the crowd, to the ghat, and ensure that small economy happens there. A balloon wala will get money, samosa wala will get money, and they also ensure that the ghats are kept clean. So this is one way we connected. Now from where did we get this idea? On June 21st, International Yoga Day, we made a call that let's do yoga on the Ganga banks. So when we gave a call, and in 2 weeks' time, when June 21 came up, we had tremendous response from the people. I had 1 million people, 10 lakh people coming to the ghats of Ganga to do yoga. So it was a great experience for them to do yoga on the ghats of Ganga. From there, we went on to Ghat Mein Hat, weekly flea markets. You can sell local products there and showcase the local culture and other things there. So Ghat Mein Hat humne shuru kar liya. We have started Ganga Aartis, and using this river as a focal point for connecting the river, we have started it. Again, once the study of the intact had come out, we found out there are umpteen possibilities. We found in every village some story associated with Mahabharata or Ramayana. I go to a village, they say Draupadi aayi thi, ya snan kar rahi thi, ya they'll say that Mahabharata ka Dronacharya ka school yahan tha, or they'll say that Varna ka ghat yahan tha. Lot of associations with mythology. We are now trying to promote it through in these ghats to that. Second, we found that many historical places, whether it is forts, whether it is the First World War of Independence, or whether it is the old bridges and all which were built in Ganga Basin, all have historical significance which we can exploit it. So tangible and intangible assets, heritage assets of Ganga has been mapped, and it is codified, and we can give it to them for development of tourism. So in this way, 1,000 kilometers of length of mainstem river Ganga and large areas or kilometers of distributaries of Ganga in Uttar Pradesh can be a great growth engine. And this again, let me tell you, tourism is one sector which does not require too much of skills. I mean, it can be various range from a very low skill to very high skill we require in tourism. A simple, responsible tourism would require people supplying materials to a hotel there. Rishikesh, we are tied up with many people from this Ganga Aartis to wash their linen, or even making small toothbrushes, toothpastes, etc., which can be used in the hotels there. So we are trying to link up livelihood with tourism, with that hospitality industry there. And another very important thing, we have found youngsters now with backpackers who are willing to walk up. Earlier, our generation probably, we were lazy to go to all these charms and all by car. But the younger generation prefer to take treks. So we have identified old trek routes, and now giving training to these volunteers to act as guides to take these people up. So there are umpteen opportunities. I think running short of time, we from Namami Gange is committed to develop tourism as a part of the entire Namami Gange program, because the initial thrust of Namami Gange was to clean the water, and we were focusing on creating STPs, which incidentally I have renamed from STPs to Nirmal Jal Kendra. Again, a sort of a branding it. It was called sewage treatment plants, which we are now really turned into as Nirmal Jal Kendra, and made a lot of paintings, and the areas in the STPs are being developed to gardens so that people become friendly to this. So from a STP or sewage treatment point of view, we are moving to connecting people, and one of the biggest connect which we have identified is tourism. The other is, I can tell you, is natural farming.
We have started natural farming in big way, promoting natural farming in a big way, and millet cultivation in a big way. And that is also being branded as Namami Gange or Ardha Ganga, and it's being sold out. Probably in a year or so, we'll have Namami Gange brand rice, Namami Gange brand millets coming up into the market, which Ganga is one of the biggest brand, and I'm sure will be lapped up by people. So we have tied up with marketing agencies to lap up these things. The last point is the Ganga Praharis, which we have taken up as a volunteer force to help this tourism. They are also acting as guides in many places. They're also producing products which can be sold in the markets. They're also helping in generating, keeping the ghats clean and creating awareness. So all in all, we find that tourism has a tremendous potential. Though Namami Ganga is not the vessel to drive tourism, in our own selfish interest to keep the Ganga basin clean and the people around it happy, we are pushing tourism. And definitely, I feel that my friend Vidyavati, she holds all these forts and the historical places under her control. So with her cooperation, with the local people's participation, we hope that the tourism as an industry will definitely grow in UP. We had associated with Ganga Utsav every year, and now we want to start what is called as the Rhine on Fire, which is a festival which happens in Rhine. We wanted to start Ganga on fire, not literally on fire, but having lots of boats with diya and all going around. So let us connect people and river to the bridge of economics, and one of the pillar of economics of that bridge is tourism. Thank you. Thank you so much. कहते हैं दुख पाप नाशिनी माँ गंगा सबकी मित्र है, गंगा का जल दुनिया में सबसे ज़्यादा पवित्र है. Ladies and gentlemen, the next speaker we have with us Mr. Sanjay Bandyopadhyay ji. He is an Indian Administrative Services Officer of 1988 batch and currently posted as Additional Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, and Chairman, Inland Waterways Authority of India, Government of India. And I request you to be a little short as we are running short of time. Thank you so much, sir. Everybody. Yeah, I can't sit here. Can I sit on this screen? This screen. On this screen I have seen. No, I have to see that in this screen. I can go that side? Respected Adarni Shri G. Kishan Reddy Ji, Honorable Minister for Tourism, Culture and Development of Northeast Region, Government of India. Adarni Shri Jaivir Singh Ji, Minister for Tourism and Culture, Government of UP. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. IWI एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे देश में रिवर सिस्टम को डेवलप कर रहा है और लगभग भारतवर्ष में 20,000 किलोमीटर रिवर सिस्टम है, जिसमें नेविगेबल लेंथ 14,500 किलोमीटर है. इसमें 19 अभी ऑपरेशनल है, 27 कार्गो के लिए फीजिबल है और 24 पैसेंजर मूवमेंट के लिए. 2022 में IWI ने 109 मिलियन टन के साथ हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा बनाया और इसमें लगभग 18% ग्रोथ पिछले 10 वर्षों में रहा. ईयर बाय ईयर अभी ग्रोथ 20% है और इसमें अभी मॉडल शेयर 2% है और आगे ये बढ़ के 5% हो जाएगा. पर द मेन फोकस in Uttar Pradesh of this sector is not only cargo but development along the river, across the river. उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि माँ गंगा यहाँ की संस्कृति है. जन्म से लेकर मृत्यु तक जो लोग गंगा के आसपास रहते हैं या उससे जुड़े हुए हैं, माँ गंगा सदियों से संस्कृति रही है. जब यहाँ पे लोग नहीं रहे होंगे उसके पहले से ये बह रही है और
इसी के आंचल में संस्कृति का उत्पत्ति हुई है। इसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे पूर्व वक्ता ने बताया, यहाँ पर यहाँ के लोगों को उसको फ़ायदा देने के लिए उसमें कई तरह के कार्य इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है। उसमें पहला कार्य है जगह जगह घाट बनाने का, फ्लोटिंग जेटीज, जो बहुत कम कीमत में बनती है परमानेंट जेटीज के। वो वाटर लेवल जब कम ज़्यादा होता है, बारिश में बढ़ जाता है, लीन सीजन जो अभी चल रहा है बहुत कम हो जाता है, वो अपने आप ऊपर नीचे होता है। तो नाव जो लगती है फ्लोटिंग जेटीज के पास, वो बहुत आसानी से उसका उपयोग कर सकती है। पूरे गंगा में IWI ऐसे 62 जेटी बना रहा है। पूर्व दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के जेटीज का उद्घाटन किया, दूसरे प्रदेशों के जेटी का शिलान्यास भी किया, और हमारे पास पूरा सर्वे है कि अलग अलग जेटी में यहाँ के रहने वाले क्या फ़ायदा उठाते हैं। टूरिज़्म एक बहुत बड़ा ऐसा स्रोत है जो कि गंगा के पास यदि आप जाएंगे, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी को वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज को झंडा दिखाकर रवाना किया, जो कि 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। अभी वो बांग्लादेश में है। 51 days, 21 river systems, and it is booked till next 2 years. This is one of the way the Ganga, we can use the rivers of the state for leveraging the tourism sector. So the small ghats which we had shown, they all will be used for local tourism. These are name of some of the ghats and the jetties which we are developing in UP. These are some of the designs, improving every day. There is the land side facility and the floating facility. They will have power, they will have other things. So this can be used not only for tourism, for ferries, but also for cargoes, small cargoes. And this will connect people to the river. Presently in India, many ferries are in operation on different rivers, from here to Brahmaputra. And starting from Varanasi, there is this circuit up to Kolkata on the Hooghly river system, then going to Bangladesh, then to Assam, which has a lot of cultural activities there. And there are total 15 night stay 5-star cruises operating. But there are thousands of small cruises which are doing excursion over the day. And we are engaging with them and trying to develop these small circuits also. After the success of this Ganga Vilas journey, which will continue for several years now, it's, as I told you, it's already booked for 2 years. And most of the tourists are all forest nationals who like to see our country. So we are developing this cruise, and we have now a vision plan for the whole country. We want to take it to 34 river cruise operational waterway, 20 circuits, and there will be 34 circuits with 9 stay. There will be many terminals developed. They will go up to 400, and nearly 7.5 million people will use the facility. And it will bring lot of investment into the country, which is calculated to be nearly 25,000 crore. And people have already, after this flagging off of the longest river cruise, people are already coming to us asking for the stretches, the circuits where they are popular, where they can invest, not only in the cruises but connected hotels. Actually, cruises are floating hotels, as you know, which will show to the people the whole culture around this,
because the civilization has developed along the rivers, and also visit to the neighboring areas. So in addition to Ganga, there is other rivers. We are trying to develop the Yamuna at Mathura, in Ayodhya. We have also, this is the circuit which I showed, starting from Varanasi to Dibrugarh, a distance of 3200 kilometers via Bangladesh. These are some of the details. It is fully indigenous made with 18 suites. Then for UP, we are giving 2 electric catamarans at Varanasi, 2 at Mathura and 2 at Ayodhya. This is to show to this sector that fully electric catamarans can be used in this state. This will be given to the states, which charging stations, and gradually people will also invest in this. In addition to that, we are also giving a hydrogen fuel catamaran at Varanasi. This is the first indigenously developed hydrogen fuel cell vessel which will operate in the country. And government is giving many such interventions for promoting this sector. River cruise tourism in India, like single window clearance. There is also a subsidy of 17% on capital cost. Then we are also maintaining and constructing the jetties, electric powers, and immigration and custom clearance, and so on. With this, we think that this sector will take off, and the connection of people in the tourism sector using the river transport will increase. So IWI started with cargo, but our cutting edge with the people is mostly now tourism sector, because there is so much interest to be seen in river tourism, and the present success in the recent past after the corona, we came out of the corona. I'm sure that the state of Uttar Pradesh will benefit out of it, and many rivers which are national waterways in the country, in this state, people will invest in this state and use the facilities which we will provide on this national waterways. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. और ladies and gentlemen, the chief guest of the session, may I please request Mr. G. Kishan Reddy ji, Honorable Minister, Tourism, Culture and Development of Northeastern Region of India, Government of India, to please guide us further for the ahead sessions. Please, मैं request करूँगी sir, आप हमें guide करें. Mr. Gangapuram Kishan Reddy ji is currently serving as Union Minister of Tourism, Culture and Development of Northeastern Region of India. He is a member of Bharatiya Janata Party. He is an MP representing Secunderabad Lok Sabha. बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन sir. नमस्कार. सबको टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स मीटिंग में जो भी पधारे, मैं सबको आपको स्वागत करता हूं. मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार के टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर भाई जयवीर सिंह जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश के टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री के सभी अधिकारीगण और अदर डिग्निफाइड गेस्ट, भाई और बहनों, I would like to thank the government of Uttar Pradesh for inviting to me Global
Investor Summit. Friends, I always felt happy and blessed to visit dynamic state of Uttar Pradesh, led by our dynamic Chief Minister, Sri Yogi Adityanath. Uttar Pradesh is a favored destination in multiple dimensions. 24 crore of population and making the state largest consumer markets of India. Friends, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है दुनिया में। अगर देशों से अगर कंपेयर किया, इंक्लूडिंग इंडिया, उत्तर प्रदेश will come 5th place all over the world. That is the population of Uttar Pradesh. Third largest economy in India. More than 8% contribution to India's GDP. 18% of year-on-year export growth. Largest railway network in India. Second highest road network in India. Highest number of MSMEs in India. Nivesh Mitra, India's leading single window clearance system. Second rank of doing easy of doing business in India. Friends, 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में करप्शन के बारे में, क्राइम के बारे में, रेड टेपिज्म के बारे में, राउडीइज्म के बारे में, गुंडाइज्म के बारे में, अट्रॉसिटीज ऑन वुमेन के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही। मोदी जी का विजन, योगी आदित्य जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश दिशा और दशा बदले हैं। उत्तर प्रदेश के गति, प्रगति और उन्नति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश में शांति, सौहार्द और समरसता का वातावरण है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और महिला सम्मान जैसे विषयों पर योगी सरकार गंभीर दिखाते हुए काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में डर का माहौल नहीं है और आम जनता में, इन्वेस्टर में एक विश्वास का माहौल, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, व्यापार के वर्ग में हो, जो व्यवसाय वर्ग में हो, एक विश्वास का माहौल आज उत्तर प्रदेश में आए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिना भारत विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश है। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तय किया है उत्तर प्रदेश में एक अच्छा वातावरण इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी हो, बिजनेस के लिए भी होना चाहिए। वो हम भरपूर प्रयास भारत सरकार के ओर से कराएं। इसलिए आज डबल इंजन सरकार का ताकत आप देख रहे हैं। आज अच्छे रोड कनेक्टिविटी है, अच्छे रेल कनेक्टिविटी है, अच्छे एयर कनेक्टिविटी है और बिजली 24 आवर्स बिजली है, टेली कनेक्टिविटी है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, लास्ट में कल्चर कनेक्टिविटी, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी उत्तर प्रदेश में आज महसूस हो सकता है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इन्वेस्टर के लिए पहला जरूरत होती है, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड हो,
ट्रेन हो, पावर हो, एनवायरनमेंट हो, इजी डूइंग अ बिजनेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम करते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए वो कॉन्फिडेंस माहौल होता है. द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टैंड्स आउट बिकॉज इट इज वेयर द ओल्ड एंड न्यू कंबाइंड इन परफेक्ट हार्मनी के साथ आगे बढ़ रही हैं. उत्तर प्रदेश इज वेयर द स्पिरिचुअल मीट्स इंडस्ट्रियल. उत्तर प्रदेश वेयर vehicles for investment meets avenues for enlightenment. Uttar Pradesh is where market arbitrage meets cultural heritage. Uttar Pradesh is where new age technology coexists with ancient sites of archaeology. Uttar Pradesh is ancient scripture meets new age horticulture. The magical roots of UP can be discovered through various circuits that include Buddhist circuit or Bundelkhand circuit, Vindhya Varanasi circuit, Ramayan circuit, Sri Krishna circuit, Ganga circuit, Agra Braj circuit, like so many. One can explore the jewels of UP like glorious Jhansi, charming Chitrakoot, vivid Varanasi. One can unwind in the wilderness of UP like Dudhwa National Park, Chandraprabha Wildlife Sanctuary, Chuka Pilbit Tiger Reserve, National Chambalshan Cherry, like this. Friends, it is a home to some of the holiest sites of different faith found in our country that includes Ayodhya, the sacred land of Prabhu Sri Ram, Madhura Brindavan, the sacred place of Sri Krishna, Saranath, the land where Lord Buddha gave his first sermon, the Kashi, the spiritual capital of India, Prayagraj, the land of Mahakumbha Mela, Hastinapur, the pilgrimage place of Jains, Chitrakoot, the place of exile where Lord Rama, Ma Sita and Lakshmana stayed for 11 years. Saranath and Kushinagar, Lord Buddha Pavitra Sthan spiritual centers. In July 2022, Varanasi was named as the first culture and tourism capital of the Shanghai Cooperation Organization. Friends, Uttar Pradesh is aiming to become a $1 trillion economy in 2027. For this, the tourism sector aims to play a crucial role achievement this. Friends, the policies of the government of India under leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के दृष्टिकोण से tourism one of the major sector for growing the economy. These policies including government of India also come out the tourism promotion policy, 100% FDI tourism industry is allowed under automatic route, 100% FDI allowed in tourism construction projects like development of hotels, resorts and recreation facilities. Enhancement the limit of emergency credit line guarantee scheme like 5 lakh crore in hospitality and related sectors. Under the credit guarantee scheme for micro,
and small enterprises, round about 2,402 crores have been approved for tourism and allied sectors. Drafting the comprehensive new National Tourism Policy 2023, which is employment and empowerment oriented for local communities, nurturing the developing young ambassadors in Indian tourism through Yuva tourism clubs in all the educational institutions in India for coming days. The National Digital Tourism Mission to ensure digitalization of tourism sector in mission mode, appointing the nodal officer for Indian missions abroad in all the important countries, inviting various skilling programs targeting the youth in tourism sector. In the last 8 years, Government of India promised ease of doing business, promoted innovation, provided predictability. We have improved our ranking from 142 in 2014. Now 2019 rank is World Bank easy of doing business. We reached 62. India improved in the Global Innovation Index, GII, from a rank of 81 in 2015, today 46. We have provided predictability by repealing more than 1,500 old and obsolete laws. As per the reports of tourism in India, estimated to contribute US dollars 250 billion of GDP from tourism, 137 million jobs in the tourism sector, US dollars 56 billion in foreign exchange earnings, and 25 million foreign arrivals are expected to be achieved in 2030 with your cooperation. Building on the synergies of a double-engine Sarkar of the UP, has formulated a new tourism policy in 22 that aims Suchana, awareness, Swagat, hospitality, Suvidha, amenities, Suraksha, safety, Swachhata, cleanness, Sanrachana, infrastructure, Sahayog, support. This is the UP tourism policy main theme. The policy aspires to mobilize 20,000 crores of investment into sector of tourism and create lakhs of jobs, additional employment in Uttar Pradesh. Friends, I believe under leadership of the Yogi Adityanath ji, Uttar Pradesh is thriving and growing like never before. Cities in Uttar Pradesh will be hosting G20 countries and Shanghai Cooperation Organization. In Shanghai Cooperation Organization also, this year we are presiding. These meetings, Agra, Lucknow, Varanasi, and other important countries. Friends, UP is a temple state. UP is a dharmic and spiritual place. UP संतों का साधुओं का स्थान है. UP रिवर्स एंड पिलग्रिम्स का सेंटर है. UP रिच कल्चरल हेरिटेज है. UP बर्थ प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स का स्थान है. UP फेस्टिवल त्योहारों का स्टेट है. UP म्यूजिक डांस का प्रसिद्ध है.
यूपी कलाकारों का प्रांत है, यूपी नेचुरल ब्यूटी है, यूपी एग्रीकल्चर का स्टेट है, इंडस्ट्रियल का स्टेट है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, यूपी बुद्ध भगवान का पुण्य भूमि है, क्योंकि लाखों बुद्धिस्ट टूरिस्ट एवरी ईयर they will visit India, especially in Uttar Pradesh. I would like to say Uttar Pradesh is a big state, big population, big focus, big ambition, big responsibility, big actions. Hence, I request all the investors to come big investments to the state. उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए उत्तम स्टेट है। दुनिया में आने वाले दिन में इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश एक उत्तम स्टेट होगा। मैं इसी शब्द के साथ आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट दी यूपी गवर्नमेंट कमिटमेंट efforts for the summit on its success. I will end my speech by saying Uttar Pradesh beckons like never before. Come investment and begin your discovery of India. Jai UP, Jai Bharat, Jai Hind. जोरदार तालियां हो जाए everybody. Ladies and gentlemen, we are very, very honored to have such dignitaries on the dais, and we also have with us Shri Avnish Awasthi ji, the Chief Advisor of the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji. मैं विनती करूंगी श्री मुकेश मेश्राम जी वो इनको बुके देके स्वागत करें। श्री अवनीश अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। Yes, yes. Chief Advisor to CM Uttar Pradesh. जोरदार तालियां हो जाए। Thank you so much, sir, for being with us. And we will be going ahead with the panel discussion. So on the panel discussion, we also have with us Mr. Vivek Shukla ji, the CEO of Lalit Suri Hospitality Group. He's an industry leader of India's hospitality industry. I request you to please come on the dais and please take your seat. बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सर आपका. Thank you so much for joining with us. Ladies and gentlemen, it's absolute honor to have sir with us, and he had been very kind to give us a lot of time. Mr. G. Kishan Reddy ji, Honorable Minister Tourism, Culture and Development of Northeastern Region of India, Government of India. हम उनको एक प्यार का प्रतीक देना चाहेंगे हमारी ओर से, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से. तो मैं विनती करूंगी श्री जयवीर सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के, इनको एक बहुत ही प्यारी सी राम जी का प्रतीक, एक मूर्ति इनको गिफ्ट करें. सर मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा आगे आ जाएं आप. जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी. जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम. I request all of our dignitaries, please join us for the photo op. और अब मैं विनती करूंगी श्री जी अशोक कुमार IAS, डायरेक्टर जनरल नमामि गंगे, मिनिस्ट्री ऑफ जय शक्ति. सर आप यहीं रहें हमारे साथ, वो एक बुक प्रेजेंट करना चाहेंगे. सर कैबिनेट मिनिस्टर सर प्लीज, हम आपको एक नमामि गंगे की ओर से एक बहुत ही सुंदर सी बुक प्रेजेंट करना चाहेंगे. हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Thank you so much for taking your time, and please join us for the panel discussion. Ladies and gentlemen, we're going ahead with the panel discussion. It is on experience sharing address. We have with us on the panel, we have Shri Santosh Kutty ji, Chief Operating Officer, Mahindra Holiday and Resorts.
Shri M.L. Srivastavaji, IFS, PCCF, come Additional Chief Secretary Tourism and Civil Aviation Department, Gangtok, Sikkim. We have with us Mr. Vivek Shuklaji, CEO, the Lalit Suri Hospitality Group, and we have with us Ms. Sonia Kriplani ji, CEO, CMO, the Unknown Planet of India, Mumbai. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस सोनिया कृपलानी जी, CEO, CMO, the Unknown Planet of India, Mumbai, to be the moderator for this session. Good afternoon. Do I see hands up? I want to see you all awake still. Great, I can see a few hands up. It's a real pleasure to be here, to meet everyone in the room, and to be speaking on a platform where there's such wonderful people like Shri G. Krishan Reddy, Shri Mukesh Meshram ji, and Shri Javeer Singh. Today there were a couple of topics that came up, topics that were close to my heart. First was started by the lady who opened the floor, Miss Vidya Bharti. Miss Vidya Bharti said something that today, for the first time, I was aware that we could do it. आपको जब भी आप दुनिया में यूपी के बारे में सुनते हैं, there are mixed reviews. पर आज मैंने पहले बार सुना है from Uttar Pradesh to Uttam Pradesh. And on that note, let us start this discussion. Who is going to tell our stories? How are our stories going to be written? How is UP going to write its story from now onwards? And I'd love to invite my panel to discuss this and say how are we going to invest, me included, in changing what UP tourism will be and bringing it forward into 2050 right away. So on this note, I invite Mr. Santosh Kutty and Mr. Santosh Kutty and Mr. Vivek to share their views on how we as investors can change what UP tourism is. Hi, good afternoon. Good afternoon, everyone. My name is Santosh. I represent Mahindra Holidays. From Sonia's question that you asked me about what UP can do. So, just to give you a background a little bit, we are about, we are the largest vacation ownership company in Asia. We do not have too much of a presence right now in UP, even though we are the largest. We have about 4,700 rooms in India and outside India. And in many states, we have 600 rooms, 500 rooms. But we do not have that many rooms in the state of Uttar Pradesh. In my view, Uttar Pradesh is today ready to get the influx of tourists, is getting the infrastructure, and is getting the airports, and is getting the flights to enable tourism finally. So from my point of view, my company's point of view, what we really need to do from a tourism perspective in UP is leverage exactly the subject that we have, the heritage and the spiritual tourism that is actually abundant in the state. UP is already the first or the second highest domestic tourist visitations that UP has. But what it does not have is, we do not have enough branded hotels. We have only 6% of the branded hotels of this country in UP, even though our population here is 25 crores, for example, right? We have 4 airports. We do not have enough connectivity internationally and nationally. In the country, of course, other than, what we have as established in UP, other than the established destinations like Varanasi, like Lucknow, like Agra, which are world famous. And remember,
two of the top 10 most visited, ticketed monuments in India are in UP. But we still fail to attract many, many more visitors, which we can do. In my view, with the new tourism policy that the government of India has, the UP tourism policy which is coming up, I am told, and there is a lot of incentives for investors like us to come in and spend our investments. So our plan, by the way, is to invest in UP. Our group chairman has spoken about it, and we intend to do that. So for us, we think from tourism point of view, for UP perspective, we need to leverage the connectivity, we need to build better infrastructure, we need to have better hygiene execution on the ground, and of course, you need much more room inventory, alternate accommodation, and move from what is, what everybody talks about destinations, just not destinations, just not properties. We need to move to experiences. That move is going to change, I think, our destiny. That's what I would add to this. I absolutely agree with you. And on that note, I'm going to call on the gentleman who's been doing that. Mr. Vivek, I know this is not your main company, but I believe the CSR and Mrs. Suri's daughter has been building the destinations, not just the hotels. Can you start with that and then introduce us to the Lalit, please? Thank you very much. Namaskar, ladies and gentlemen, Honorable Minister Sir, and Deviyon Sajjano, ladies and gentlemen. It's a real proud moment for me because हम भी Uttar Pradesh से हैं, और it's a great honor for me to be here standing in front of this august audience. First and foremost, I would like to thank the UP Global Investors Summit organizers, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, Honorable Tourism Minister, and our dear officers and august gathering. उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है. आई थिंक ये छोटे से हमारे संस्कृति का हिस्सा रहा है, और गॉड्स ओन कंट्री करके एक टैगलाइन आई थी एक स्टेट के लिए. हम बोलेंगे ये गॉड्स ओन स्टेट है. उत्तर प्रदेश इज गॉड्स ओन स्टेट. सो on that note, thank you very much for having me over here. Our founder, Chairperson Shri Lalit Suri ji, and our current Chairperson and CMD, Dr. Jyotsna Suri ma'am, and her family have created a vision of developing destinations as a landmark. And wherever we go, we want to develop destinations and create opportunities in every front, whether it's creating employment, promoting local heritage, art and culture, the local cuisine, and wherever we are across the landscape of the country, we have done that. हालांकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमारा कोई अभी ऑपरेशनल होटल नहीं है, मगर चित्रकूट में मैडम ने कुछ साल पहले इन्वेस्ट किया था, और आने वाले समय में और ये व्यवस्था देख कर के हमारी जो संस्कृति है, our culture, our heritage, I think UP has everything to offer, from wildlife to nature to every element of what we want to offer. And sky's the limit, because I think, as my colleague Santosh just mentioned, with the right investment that is coming in upgrading the infrastructure, creating of airports, creation of hotel stays, and it's not only in main cities of UP, but in the other cities as well, lesser known destinations. My childhood, I used to go for picnics to a place called Bithur. Bithur is also not many people would have heard of, and I think it had some great amount of alligator farming, and there used to be these alligators that we used to go and have fun and watching it. From a spiritual tourism, religious tourism, wellness destination, wildlife tourism, I think UP has every element what India offers in different states. And I think if we all need to come together as partners and create the best platform of opportunities towards the surge that Uttar Pradesh truly deserves. And I think we can go leaps and bounds in making Uttar Pradesh the best state, where
the real investment is going to come in, and we are very, very confident that we will also be having our footprint very, Sir, very, very soon. I'm Thank sorry you. to interrupt. I would like to know कि जैसे आपने आइस हॉकी स्टार्ट किया है लेह लद्दाख में, आपने कभी सुना है इंडिया आइस हॉकी के चैंपियंस बनाती है? इन लोगों ने स्टार्ट किया है आइस हॉकी के Thank you so much. हम तो लोगों ने आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं? Can you tell us how heritage and culture will make the chain over here? How can we bring heritage and culture to bring up a place like Bitur, which I love also? So I think thank you for reminding. हम लोगों ने द्रास कारगिल जो कि इंडिया के मैप में एक अलग मुकाम से जाना जाता है, हम लोगों ने वहाँ पे एक पोलो मैच भी किया था। हम लोगों ने लेह में आइस हॉकी भी करी, बॉम्बे में हम लोगों ने डब्बा वाला का रेस किया, खजुराहो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने तिपैया थॉन करी, कश्मीर में श्रीनगर में हम लोगों ने शिकारा थॉन किया, और इस तरीके से हम यूपी में कुछ एक्साइटिंग और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ हम लोग आर्ट एंड कल्चर का रिफ्लेक्शन, आई थिंक देयर इज़ सो मच ऑफ, चाहे ये शिव विवाह हो, शिव और पार्वती का विवाह हो, या फिर हमारे राम जन्मभूमि की नेतृत्व में जो आयोजन होता है अयोध्या में, हम उस प्रकार के कोई बहुत ही अच्छे तरीके के फेस्टिवल्स क्रिएट करेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे दैट हम सब लोकल कम्युनिटी को उसमें प्रोत्साहन दें और उसमें पार्टिसिपेट करें। मैडम Thank you. मैडम विद्यावर्ती, मैडम ओ श्रीवास्तव जी, सॉरी सर जी, आपको कैसे लगता है कि हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म को यूज़ करके ना ही कोई और ऑडियंसेस लेके आए, कोई और ट्रैवलर्स लेके आए, पर अभी जो ट्रैवलर आता है, जो यूपी को आता है, उसको थोड़ा उनका स्टे लंबा कर दे, उनको थोड़े एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें कराए, क्रूज़ टूरिज़्म कराए, कैसे चीज़ें उनको इन्वॉल्व करे, इमर्स करे कि उनकी यात्रा भी बहुत सुखी हो और वो खर्चे भी थोड़ा ज़्यादा, कि यहाँ की आमदनी भी बढ़े। धन्यवाद। Respected Honorable Union Minister, respected Minister for Tourism and Culture, Shri Jaivir Singh Ji, all the dignitaries on the dais, off the dais, and ladies and gentlemen. जो सवाल आपने पूछा कि अगर कोई टूरिस्ट आता है उत्तर प्रदेश में तो उसके प्रवास को और स्मरणीय कैसे बनाया जाए, उसके प्रवास को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, स्वतः यहाँ रुकने के लिए इच्छुक हो, ये मूलतः सवाल है आपका। जी हाँ, देखिए, मैं सिक्किम राज्य से हूँ, मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव हूँ सिक्किम में टूरिज़्म एंड सिविल एविएशन का, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अपनी बातें कहूँगा जो यहाँ के लिए मौजू होंगी, पर्टिनेंट होंगी। जो आपके यूएसपीज़ हैं, जैसे सिक्किम की बात मैं करूँ तो 0.2% जोग्राफिकल एरिया कंट्री का है भारत का, और 1/4 ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री इज़ देयर इन सिक्किम। ये उसका एक बहुत बड़ा यूएसपी है। क्राइमलेस, एकदम परफेक्टली क्राइमलेस स्टेट है। इको टूरिज़्म वहाँ पर बहुत संभावित है, बहुत प्रबल संभावना है उसकी। नेचर एंड कल्चर की बहुलता है, तो ये उसके यूएसपीज़ हैं। इसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो आज सवेरे से ये बातचीत चल रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश में। 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके पास एयरपोर्ट्स हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, दूरस्थ स्थानों तक हमारे रोड्स की पहुंच को और प्रबल बनाया गया है। तो हम सिक्किम में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। चाहे वो वेलनेस टूरिज़्म हो, आपके बुद्धिस्ट सर्किट का भाग है, ईस्टर्न बुद्धिस्ट सर्किट का सिक्किम, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लॉर्ड गुरु पद्मसंभव की भूमि है, आपको पता है, सामदुपची, चेरी जी, ये विश्व स्तर के टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। एक नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्वतः ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मशहूर है, एक नैरेटिव ऑलरेडी उसका स्थापित है। उस नैरेटिव को हम और कैसे प्रबल कर सकें।
हमारे उत्तर प्रदेश में जो वैविध्य है, मेरे ख्याल से बहुत कम जगहों पे ऐसा वैविध्य है। आप यहीं से बात, मैं बनारस का पैदाइश है मेरी, बनारस का पैदा हुआ हूँ। 4 कोस पे पानी बदले और 8 कोस पे पानी, तो उत्तर प्रदेश के लिए ये प्रचलित है। इतना वैविध्य है इस प्रदेश में, इस बात को आप किस तरीके से शोकेस कर सकते हैं, इतनी हिस्टोरिकल हमारे लेगेसी है, उसको लेवरेज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम किसी संग्रहालय में जाते हैं और हमको 2 तलवारें टंगी दिखती हैं तो देख करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर उसी में गाइड ने बताया कि साहब ये जो 2 तलवारें हैं, इन्हीं तलवारों से महारानी लक्ष्मीबाई ने जो है इनका सरकलम किया था अंग्रेज़ों का, तो आप तुरंत वहाँ पे खड़े हो जाएंगे और 1 घंटे देखेंगे कि साहब ये क्या चीज़ है। तो इस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में इसकी पूरी संभावना है। संभावना ही नहीं, ऑलरेडी ये नैरेटिव बन चुका है। आज सारा देश और विश्व जानता है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत प्रबल है और बहुत सक्षम अधिकारी लोग हैं यहाँ पर। हम निरंतर उत्तर प्रदेश के साथ संपर्क में हैं और सिक्किम टूरिज्म मैं आपको बताऊं कि बहुत मजबूत स्थान पर है। हम निश्चित रूप से एक्सचेंज के जरिए उत्तर प्रदेश में और करें। धन्यवाद। आई वांट यू टू स्पेंड 1 मिनट मोर। एक क्वेश्चन है आपसे। 17,000 फीट हाई थंकू में आप लोगों ने होम स्टे रख लिया है और बहुत ही बढ़िया कि जेट प्लेन्स और प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं। आप इसके बारे में जो होम स्टे, हाई क्वालिटी होम स्टे और इको टूरिज्म जो आपकी बनारस के घाट पे बन सकता है, उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बहुत बनाइए। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव बीन देयर एंड यू आर शोकेसिंग इट हियर। होम स्टेज टूरिज्म का जो हमने सिक्किम में 1194 होम स्टेज ऑलरेडी हम बना चुके हैं। एक छोटा सा राज्य है, आपको पता है, मुश्किल से 7 लाख की पॉपुलेशन है। हर साल हम करीब 18 से 20 लाख टूरिस्ट हम सिक्किम में आते हैं और होम स्टेज आर मोर पॉपुलर दैन द रेगुलर आपके टूरिस्ट होटल्स, हाई एंड टूरिस्ट होटल्स। गैंगटोक में मैं कह सकता हूँ कि शायद लखनऊ एक बड़े राज्य में उतने 5 स्टार होटल्स नहीं होते जितने गैंगटोक में हर मशहूर ब्रांड आज आने को तैयार है। आपके पास नेचर है, इको टूरिज्म है, माउंट कंचनजंगा है, नेचर है, कल्चर है और इस कहानी को आप एक सीमलेस कहानी को पिरो सकें। होम स्टेज में जाकर के लोग कुछ भी देने को तैयार है। अगर आज मैं 10,000 रुपये या 15,000 रुपये प्रतिदिन की बात रखूँ, वहाँ पर उसका टैरिफ रखूँ, देर आर पीपल टू टेक, देर आर हंड्रेड्स ऑफ टेकर्स। So home stays tourism is a very successful story in Sikkim. Definitely that can be emulated elsewhere. Sikkim tourism has received more than 33 national and international awards. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for that. और 26,000 था, 15,000 नहीं. Thank you so much, Ms. Sonia Kriplani ji, for moderating the session very well. Everybody, let's put our hands together for Mr. Vivek Shukla ji, Shri M.L. Srivastava ji, and Shri Santosh Kuti ji. Thank you so much for the panel discussion. Thank you so much. Ladies and gentlemen, अब मैं विनती करूँगी हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर टूरिज्म एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश श्री जयवीर सिंह जी को वे हमारा मार्गदर्शन दे करें। सर। आप लोग काफ़ी सुन चुके हैं और मुझे लगता है था सूना सूना से आप लोग बैठे हैं, तो क्या थकावट आ गई क्या? थोड़ा उत्साह नहीं? आपने जी कितने रेड्डी साहब इतना अच्छा बोले, लोग अच्छे सुझाव दे रहे हैं, थोड़ा उत्साह जोश रहना चाहिए। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, इस कार्यक्रम के बहुत बहुत सम्मानित आज के चीफ गेस्ट भारत सरकार के पर्यटन संस्कृति और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के सम्मानित मंत्री, बहुत ही ऊर्जावान क्षमतावान, जो सदैव उत्तर प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को और प्रमोट करने के लिए लगातार हम लोगों को संरक्षित किए रहते हैं। हम सबके प्रणेता आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी साहब, माननीय मंत्री भारत सरकार, मंचासीन श्रीमती विद्यावती जी जो महानिदेशक हैं ASI की, आदरणीय जी अशोक कुमार जी, नमाम गंगे के DG साहब, श्री
संजय बंदोपाध्याय जी, अध्यक्ष अंतरजलीय यातायात अथॉरिटी, आदरणीय अवनीश अवस्थी जी जो हमारे सीएम साहब के, मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हैं, आदरणीय डॉक्टर जीएन सिंह साहब, इनके बारे में शायद आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि कोरोना काल में आप भारत सरकार में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया थे। आपके ही देखरेख में वैक्सीन का जो खोज हुई, उत्पाद हुआ, उसके लिए आपको एक बार स्वागत सत्कार होना चाहिए। आप आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। हमारे प्रमुख सचिव साहब, हमारी यूपी की टूरिज्म और कल्चर के अधिकारियों की पूरी टीम और बहुत सभी इन्वेस्टर्स और विशेषज्ञ लोग जो मंच पर और मेरे सामने मौजूद हैं, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने का मन बनाया है, उत्तर प्रदेश में रुचि दिखाई है, उन सबका उत्तर प्रदेश की ऐसी धरती पर जो ऋषियों की धरती, मुनियों की धरती, तपस्वियों की धरती, तमाम बोली भाषाओं की धरती, विभिन्न संस्कृतियों की धरती, आज़ादी की लड़ाई में सर्वोपरि भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश की धरती पर जहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं, विभिन्न बोली भाषाओं की धरती, जहाँ अवधी, ब्रजी, पूर्वांचली, बुंदेलखंडी तमाम भाषाओं का, जहाँ पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं का इस प्रदेश में आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आपने निवेश में जो रुचि दिखाई है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए इसको तवज्जो देते हुए जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में जो भी प्रावधान आपके लिए इंसेंटिव्स, आपके लिए सब्सिडीज और अन्य सुविधाएं जो घोषित की गई हैं, उनको पूरी तरह से पालन करते हुए हम आपको उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर परिवेश देने का काम करेंगे। आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको सहूलियतें देंगे। और वैसे भी आज आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में हमारा लक्ष्य 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का था, उसके सापेक्ष लगभग 33 लाख करोड़ के एमओयू उत्तर प्रदेश के आज के धरती पर एमओयू होना, ये इंगित करता है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर के, जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करते हुए जो एक परिवेश देने का काम किया है, माहौल देने का काम किया है, हम आपको आश्वस्त करते हैं आपकी संरक्षा, आपकी सुरक्षा, आपके निवेश को पूरी तरह उत्तर प्रदेश में आप संरक्षित और सुरक्षित पाएंगे, आपको बेहतर माहौल देंगे। और खासकर पर्यटन की यदि बात करें तो हम लोगों का 20,000 करोड़ का लक्ष्य था, उसके सापेक्ष आज 1,17,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश एमओयू होने का काम आप सबकी कृपा से हुआ है। आपको हम आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके परिवारीजन की तरह, आपके शुभचिंतक की तरह सदैव नीतियों, रीतियां जो भी उत्तर प्रदेश में तय की हैं, उनका पालन करते हुए आपकी सुरक्षा में, संरक्षा में, आपके सहारे के लिए, आपके संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहेगी। मैं पुनः आदरणीय अपने माननीय मंत्री जी, भारत सरकार बड़े भाई जी किशन रेड्डी जी का उत्तर प्रदेश की सरजमी पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन इस बात के लिए करता हूं कि उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए संरक्षित करने का काम किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद इसी प्रकार यह बना रहा तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हिंदुस्तान का पहला राज्य पर्यटन की दृष्टि से कोई भी टूरिस्ट अगर आएगा, चूँकि यहाँ अपार संभावना है, आध्यात्मिक स्थल हों, धार्मिक स्थल हों, प्राकृतिक रूप से स्थल हों, तमाम तरीके से ऐतिहासिक रूप से दुनिया का 7वां आश्चर्य ताजमहल यहाँ हो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त व्यवस्थाएं हों, जहाँ एयर कनेक्टिविटी हो, जहाँ वाटर कनेक्टिविटी हो, ऐसे प्रदेश में आपका निवेश
फलीभूत होगा, ये मैं आपको पुनः भरोसा दिलाता हूँ। और आदरणीय मंत्री जी, आपका यह नेतृत्व मिलता रहा तो उत्तर प्रदेश को इन 5 सालों के अंदर अंदर बहुत आगे ले जाएंगे और पर्यटन के विकास के लिए, संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए हम बहुत कुछ आगे ले जाने का आपका सपना जरूर पूरा करेंगे। मैं पुनः आपका अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए, और जो भी निवेशक यहाँ आए हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हमारे पर्यटन के क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने एमओयू किए हैं या एमओयू करने की इच्छा रखते हैं, उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन, वंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और अब मैं विनती करूंगी श्री मुकेश मेश्राम जी, IAS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, to come and guide us. Before that, we would like to give a memento to our Minister Sir, Shri Jaivir Singh ji, Cabinet Minister, Tourism and Culture, Government of उत्तर प्रदेश। जोरदार तालियां हो जाए ये गिफ्ट टूरिज्म, उत्तर प्रदेश टूरिज्म की ओर से। और अब मैं विनती करूंगी Ms. V. Vidyavati ji and Shri Santosh Kutti ji, thank you so much for being with us. Ms. V. Vidyavati ji, Director General, Archaeological Survey of India, thank you so much for being with us, ma'am. Mr. M.L. Srivastava ji, thank you so much, sir. Mr. M.L. Srivastava ji, PCCF, Additional Chief Secretary Tourism and Civil Aviation Department, Gangtok, Sikkim. Mr. Vivek Shukla ji, thank you so much. Ms. Sonia Kriplani ji, thank you so much for being with us. Mr. Avasti ji, thank you so much for always guiding us. और हमारे उत्तर प्रदेश टूरिज्म का एक बहुत ही प्यारा सा स्टॉल भी है, आप सबसे विनती करते हैं कि आप ज़रूर से उस स्टॉल को विज़िट करें और हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा जानकारी लें। मैं सर की अनुमति से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और अपने माननीय मंत्री जी की अनुमति से केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यूपी का हमारा नारा है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। और ये नया नारा जो हम लोग दे रहे हैं कि यूपी में जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यूपी में इन्वेस्ट नहीं किया तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, ये मैं सर की अनुमति से कहूँगा। यूपी को देखना है, हर परिवार को अपने बच्चों को मथुरा, काशी, अयोध्या सब जगह भेजना है, बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। और मैं विनती करूंगी श्री जयवीर जी को कि वे श्री जी किशन रेड्डी जी और हमारे माननीय मिनिस्टर टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मोमेंटो देके इनका भी अभिनंदन अदा करें। जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर वेरी वेरी ग्लैड। और यही नारा है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि आप सबको बुला रही है और ज़रूर से विजिट करें। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा ना हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। और अब मैं विनती करूंगी श्री मुकेश मेश्राम जी, IAS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, to give the closing remarks. Sir. Thank you very much. आप लोग काफ़ी देर से सुन रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, श्री जी किशन रेड्डी जी, ऑनरेबल टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री जयवीर सिंह जी, all the dignitaries sitting on the dais and distinguished guests, participants, delegates.
आप उस जगह पर हैं जो हॉस्पिटलिटी की कैपिटल है, मेहमान नवाजी के लिए जाने जाने वाला शहर लखनऊ, जो अदब का शहर, तहजीब का शहर और मेहमान नवाजी का शहर है, जहाँ कहा जाता है पहले आप। पहले आप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं तो उसे कहते हैं आपके दौलत खाने में तशरीफ़ लेकर जाएंगे। जब अपने यहाँ बुलाते हैं तो कहते हैं हमारे गरीब खाने में आइए। यानी हम कितने हम्बल हैं। हम्बलनेस ही हॉस्पिटलिटी की जनक है। सो दिस इज़ उत्तर प्रदेश, जहाँ पर देयर इज़ इमेंस पोटेंशियल इन टूरिज्म सेक्टर एंड आगे बढ़ा दो भाई, and globally acclaimed tourist destinations, land of diversity with 12 tourist destinations, Ramayana Circuit, Krishnabra Circuit and various other circuits, UNESCO World Heritage Sites. Uttar Pradesh focus on new thrust areas for faster development. We have recently come out with very attractive UP Tourism Policy 2022, launching one of the most industry-friendly policy, opening entire state for capital subsidy, incentive and disbursement that will be done online with transparent manner. And we are also in developing niche tourism areas, private sector participation, already 6 heliports we are offering to give on long-term lease. Then we have heritage tourism. Recently we have notified various forts and palaces, because in Bundelkhand, after survey, we have identified 31 such properties which we can lease out to make basically heritage hotels under adaptive reuse. And then we have tourism sectors and Tirth Vikas Parishads also we have formed. 33 new eligible categories. Basically, we have included all varieties of units under hospitality and tourism sector. So it covers river cruises, budget hotels, dhabas also for wayside amenities, camping, yoga centers, public museums, galleries. Every unit will get subsidies, capital subsidies, fiscal, non-fiscal both. And then these are several new themes added to, starting from heritage, art and tourism, culture to spiritual, adventure tourism, cuisine tourism, UA tourism. Honorable Minister just mentioned in his address. And this is tourism policy. Earlier in 2018, it was 15% subsidy, which we have enhanced to 25%. And if women entrepreneur is there, then additional 5% subsidy will be given. So in total, 30% subsidy for women and SC/ST investors. And projects focus tourism destinations. Lesser known tourism destinations where unserved destinations are, and we can give 30% subsidies. Maximum subsidy we are offering per project now raised to 40 crore. So these are very attractive incentives which we are offering, and these already Honorable Union Minister has mentioned. These are Suchna Swagat Suvidha, which tourism encompasses and revolves around. So thank you very much. Thank you very much, Honorable Union Minister for Tourism, Culture and Development of Northeastern Regions of India, for sparing his valuable time to address this August gathering. मैं आभारी हूँ हमारे माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर हमें प्रदान किया। साथ ही साथ भारत सरकार से आए हुए समस्त सचिवगण एवं अधिकारीगण का, हमारे सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री अवनीश अवस्थी जी एवं जीएन सिंह जी का, एवं यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं का, भाइयों बहनों का, डेलीगेट्स का थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे आप सब लोगों के साथ सहयोग और सत्कार के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का, माननीय कैबिनेट मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंकफुल एंड एवरीबॉडी प्रेजेंट आउट हियर, all the delegates, we are very very thankful to everybody and it had been a wonderful session and the panel discussion। और हमारा next session शुरू होगा अब 4:30।
नमस्कार, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पर्यटन और हेरिटेज को बढ़ाने के लिए सत्र अभी चल रहा था, हम सभी देख रहे थे। और उत्तर प्रदेश में जब भी हम पर्यटन की बात करते हैं तो